Hello, good afternoon and namaskar to all my viewers. आज हम वर्बल एबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे एंड दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा कि हमारे को नाम ही क्लियर कर रहा है मीन्स यूजिंग वर्ड अ पर्टिकुलर वर्ड इन प्लेस ऑफ टू मैनी क्लटर्ड वर्ड्स. जब भी हम कोई सेंटेंस के लेवल को एनहांस करते हैं तो हम एक सिंगल वर्ड जो उतने सारे वर्ड्स का मीनिंग चेंज किए बिना और उसको एक डिफरेंट प्रॉपर वे में उसे प्रेजेंट करता है, उसे हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन है हमारा वर्बल एबिलिटी पार्ट का. आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कैसे हम टर्म्स यूज करते हैं. First of all, for a place, right? Our first word which shows a venue or a place, here we begin with a cage made for birds. Now, birds के लिए जो हमारा scientific name आता है वो आता है avians और इसी से derived है हमारा ये word that is aviary. So, a cage for the birds, a place for the birds is known as aviary. नेक्स्ट अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पर हम अपने रिकॉर्ड्स अपने डॉक्यूमेंट्स को सेफली और सिक्योरली रख सकते हैं उसे हम बोलते हैं आर्काइव्स. आर्काइव्स अगर आप रिलेट करो तो आर्कियोलॉजी से आप इजीली याद रख सकते हो इस टर्म को एंड दस इट इज क्वाइट इजी टू रिटेन. देन अ कलेक्शन ऑफ बी hives. Collection of beehives takes the term as apiary. Now this has been derived from a French term apis, जिसका मतलब होता है bees, right? So this is a collection of the beehive, that is apiary. Then a place where the fish are kept and that is known as aquarium. Now aqua जो term है वो water के लिए आया है and as we know fish live in water, so the term is easy to retain and remember. It is known as aquarium. Next we have a place of activity. Now wherever some activity take place, that is known as an arena, right? So a place of something, some event happening or some place where some occurrence takes place, that is known as arena. Then next word is a tunnel or hole dug by a small animal. तो जनरली जो एनिमल्स होल्स बनाकर रहते हैं उन्हें हम उनके होल्स को हम बरो बोलते हैं. सो दैट इज अ होल दैट इज नेम्ड एज अ बरो. एंड देन वी हैव द वेरी common term which we use these days, that is a place of exercising and training. It is known as a gym where we learn to how to get fitness and we exercise and thus it is quite useful for us. Then the next venue term that we have is an institution for the care of the people who are mentally ill, who are unwell and unfit mentally. उसके लिए हम use करते हैं asylum, right? So there they are treated and they are kept for their proper care. Then a collection of weapons and all sorts of military equipments. That place is known as arsenal. So arsenal takes us we learn this term as something where we keep arms and all our grenades and everything safely and weapons safely. A large bedroom for a number of people in a school or an institution, so that is known as a dormitory. A dorm, a place where a lot of people can at the same time get accommodation and they can sleep at the same time, is a big room called dormitory. Then a storehouse for threshed grain. अब जितने भी हमारे grains grow करते हैं हम सारे एक साथ use नहीं करते हैं. They are stored at a certain place and that place is known as a granary. Then a large building for housing aircraft, and so many aircraft are there which are not always on a flight. So where we keep them, that place is known as a hangar. Hangar is also a cloth hanger, but here we use this term for even keeping our aircrafts safely. Then a place where the coins, medals or the tokens are made is known as
mint. So mint is the right word which we use for a place where the coins are made. And a place of enclosed land with fruit trees is known as orchard, जहाँ पे बहुत सारे fruit trees grow करते हैं, and like we have apple orchards or we have the wine orchards where we can grow them in large number and utilize them for our economic benefit. So these are some of the places which we use quite often. Now next to come is one word substitution for the government system. We have various kind of government system that prevail in different countries. The like system where a self-governing country or region when we talk about, उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमस बॉडी है, वो अपने आप को सेल्फ गवर्न कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है. सो दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज autonomy. Then a state, society or group governed by old people, जहाँ पे the old people they have a control over all the welfare, that is known as gerontocracy. Now cracy जो term है, cratocracy, ये power से आए हैं, and geronto is old man in Greek, right? So from there this word gerontocracy has been taken. A system, a form of government in which power is held by the nobility, that is the high ranking people, the noble people, उसे हम बोलते हैं aristocracy. So aristo is for the people who are of high rank, who are of noble upbringing, and thus the term takes its form. A system of government by one person with absolute power. अगर एक पर्सन के हाथ में सारा कंट्रोल, सारा पावर आ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी. मतलब एक पर्सन के हाथ में द कंप्लीट सिस्टम इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, और thus we get the term autocracy. गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड हैंड, जिन्हें भी बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं है, अनुभवहीन है, इनएक्सपीरियंस्ड है, वहाँ पे हम टर्म करते हैं, यूज़ करते हैं नियोक्रेसी. नियो इज समथिंग फॉर न्यू, right? So neocracy is the right term for inexperienced hands when the government is run by them. Then a government by the wealthy. Wealthy means those who have lot of money, those who are very rich, and for that we use the term plutocracy, right? So it has come from the term Pluto, that means well, and thus the government by the wealthy people is plutocracy. Next term, what we have is a state of disorder due to absence of authority. Now, if there is no one, अगर कोई शासक नहीं है, कोई रूलर नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो वहाँ पे अराजकता होती है. और अराजकता के लिए हम टर्म यूज करते हैं anarchy. means no archy or no form of government to control them. Thus it is anarchy. Then a system of government in which the decisions are taken by the state officials, that is known as bureaucracy. अफसरशाही जिसे हम हिंदी में बोलते हैं. And here the bureaucrats, the state officials, they take most of the decisions, and thus the term comes out to be bureaucracy. Then a government by the eligible members of a society where the representatives are elected and they are the ones who take the decision on the behalf of the people, that is known as democracy. Like our country is the biggest democracy in the world, and thus the example and the true meaning of democracy. Then government not connected with religious or any spiritual matters is known as secular. Now जहाँ पर कोई भी बाइंडिंग नहीं है, कोई भी आपके लिए फोर्सफुल रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को, आप पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करो, दैट इज नोन एज अ सेक्युलर system. Then a form of government with a monarch at the head, जहाँ राजा, जहाँ king वहाँ का head होता है, उसे हम बोलते हैं monarchy. तो अभी भी कुछ ऐसी countries हैं जहाँ पे the system of kings and queens is still prevalent, and there we talk about monarchy. In the earlier time, in the past, as we know, ये बहुत ज़्यादा prevalent था. सभी countries में kings होते थे जो govern करते थे पूरे एक state को, एक province को. So there the term monarchy stands. फिर another term is
a political system based on government of men by God, where it is like the people who run the government, they are like gods and goddesses. That is known as थियार्की. तो आर्की, क्रेसी, जितने भी ये टर्म्स हैं, ये सारे गवर्नमेंट सिस्टम या पावर को शो कर रहे हैं. एंड thus we have this term where the government is run by the gods who are considered to be so important like gods, and that is known as thearchy. Then we have the next term where we talk about the words which are used for a group or collection. Now, for a group of or collection, the words that we commonly use are a large gathering of people of a particular type. एक तरह के लोग, मान लो सेलर्स का अपना एक ग्रुप है, या फिर इसी टाइप से कोई म्यूजिशियंस हैं, उनका अपना एक ग्रुप है, and particularly they have their own purpose of coming together. That is known as a bevy. So a group of a people of particular type is known as bevy. Then a close political meeting, a meeting where only the political matters are discussed and their leaders, they meet together, that is known as caucus. So caucus is a term for a political gathering. Then our next term is a group of worshippers. लोग जो एक साथ वर्शिप करते हैं, मान लीजिए जैसे हम हिंदी में टर्म यूज करते हैं सत्संग, तो उसके लिए वर्ड आता है congregation, where the people sit together and they worship God, and that group is known as congregation. Then an exclusive circle of people with common purpose. Now कुछ लोग जो exclusively जो एक common purpose के लिए gather होते हैं, मिलते हैं, that is known as a clique. Right, so the people who gather together for a particular purpose is known as, or a common purpose is known as clique. A community of people smaller than a village. Now we have a village where there are a lot of people living together. Now a community which is smaller than a village, it is not as big in size, and that is known as hamlet. A few huts put together at one place and they are living together for a common purpose, that is called as a hamlet. Then a group of things which have been hidden in a secret place, that is called as a cache. Now हमारी जो इवन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, कभी कभी हम स्टोर करके रखते हैं कुछ चीज़ें, एंड दैट आर यूज फॉर अ लेटर टाइम, सो दैट इज अ कैच मेमोरी. तो यहाँ पर भी वही टर्म है, हिडन रखी जाती हैं कुछ चीज़ें जो हमें उस समय नहीं बताई जाती हैं, एंड दैट इज अ ग्रुप ऑफ थिंग्स केप्ट इन अ सीक्रेट प्लेस, जिसे हम बोलते हैं कैच. Then next is a group of people, typically they are on a vehicle and they are moving towards one place, उसे हम बोलते हैं caravan. जैसे कारवां लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है. पहले के टाइम में जो हमारे पैस्चर्स होते थे, जो चरवाहे होते थे, वो इस टाइप से caravan में मूव करते थे, and they were safe in that manner. Right, so a term comes out to be caravan, जो समूह एक साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, that is known as a caravan. Right, then we have the one word substitution for the collection of stars. तो अभी हम उसी ग्रुप में ही बात कर रहे हैं. हमारे ग्रुप के नेक्स्ट फ्यू टर्म्स हैं a series of stars. बहुत सारे स्टार्स के समूह को हम बोलते हैं constellation. So constellation of stars, ये हम कॉमन टर्म है जो हमने काफी बार सुना होगा. A small fleet of ships और बोट्स के स्मॉल ग्रुप को जो एक साथ मूव कर रहे होते हैं टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसे हम बोलते हैं फ्लोटिला. तो दे आर फ्लोटिंग, दे आर मूविंग इन वन डायरेक्शन, एंड दस a small group of ships, that is known as flotilla. A temporary police force, टेम्परेरी किसी भी एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, उसका आउटपुट देने के लिए अगर हम कोई पुलिस फोर्स डिप्लॉय करते हैं तो हम उसे बोलते हैं पॉजी. तो पॉजी इज अ टर्म यूज फॉर अ टेम्परेरी पुलिस फोर्स. अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर. अब एक साथ अगर बहुत सारी फिश हम एक जगह रखते हैं तो हमने उसके लिए टर्म यूज किया था एक्वेरियम, और अगर वो फ्लोट करके एक साथ जा रही हैं तो हम बोलते हैं शोल ऑफ फिश. तो शोल एक term hai, like we have the collective term for a large number of fish. Then a strong and fast moving stream of water or liquid is known as torrent.
कभी कभी जब बहुत तेज बारिश होती है तब हम ये भी बोलते हैं टॉरेंशियल रेनफॉल, तो बहुत तेजी से, क्योंकि वो पानी जो है वो नीचे गिरता है। सो कोई भी जो तेज मूवमेंट से कोई भी पानी लिक्विड का जो फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं टॉरेंट। देन अ ग्रुप ऑफ कैटल और शीप और अदर डोमेस्टिक एनिमल, जब वो समूह में झुंड में चलते हैं तो हम उसे बोलते हैं हर्ड। सो दिस इज द टर्म वी यूज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल दैट और डोमेस्टिक एनिमल्स व्हेन दे आर टुगेदर। देन हम नेक्स्ट जो टर्मोलॉजी पढ़ेंगे that is about the one word substitution for the person or people, a particular person, a particular उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं जो एक पर्टिकुलर पर्पस में एंगेज्ड है। जैसे हमारा फर्स्ट टर्म है who does a thing फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, तो एक ऐसा पर्सन जो कोई भी काम अपने इंटरेस्ट के लिए करता है, खाली प्रोफेशन या मनी मेकिंग के लिए नहीं करता, उस पर्सन को हम बोलते हैं अमेचर। बट अमेचर इज वन who has a keen interest in something, in doing something. वन हु कैन यूज ईदर हैंड्स विद ईज, अब एक ऐसा पर्सन जो अपने दोनों हाथों का इक्वली इस्तेमाल कर सकता है और दोनों हाथों से इक्वली वो सेम टाइम साइमल्टेनियसली लिख सकता है या उनसे कोई काम कर सकता है, दैट इज नोन एज एम्बी डेक्स्ट्रस। तो एम्बी वर्ड जो है वो टू के लिए आता है, इसीलिए यहाँ पे डेक्स्टर का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। सो वन हु कैन यूज बोथ द हैंड्स टुगेदर इज नोन एज एम्बी डेक्स्ट्रस। Then an unconventional style of living is known as bohemian. That is very unusual. It is not the one which is very regular type. तो जो लोग थोड़ी unconventional lifestyle को follow करते हैं उसे हम बोलते हैं bohemian. Then next is one who feeds on human flesh. Any person who eats the flesh of another person is known as कैनिबल। राइट, वैसे तो हमने टर्म्स पढ़े हुए हैं हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, तो जो खाली प्लांट्स पे फीड करते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। ऐसे जो दूसरे जो स्किन जो फ्लैश पे फीड करते हैं उन एनिमल्स को हम कार्निवोर्स कहते हैं। जो दोनों वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही डाइट ले सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज ओमनीवोर्स। बट इफ एनी पर्सन takes the flesh of another person, consumes it, that is known as cannibal, या फिर उन्हें हम man eaters भी बोलते हैं। So cannibal is a man eater. Then a person who regards the whole world as his country, सबके साथ मिलजुल कर अपना एक लाइक उसके लिए वो सारी कंट्रीज जो हैं दे आर नॉट एन एलियन लैंड फॉर दैट पर्सन, दे आर ही इज एट होम, he is in whichever country, that person is known as cosmopolitan, right? So he adjusts in every situation, in every country is a cosmopolitan. Then one who is the center of attraction, किसी की आंख का तारा होना, बहुत ही क्लोज होना या किसी को बहुत अच्छा लगना, बहुत भाना, that is known as सिनोजर। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कोई भी पार्टी में कोई भी जना जो बहुत अलग से और बहुत सबको अट्रैक्ट करता है, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ सिनोजर। देन द नेक्स्ट टर्म इज वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स, जो अपने ही बारे में बोस्ट करता रहता है, अपने ही अचीवमेंट्स, अपने ही गेन्स के बारे में या सेल्फ एजर्टिंग होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं egoists, because they, I, me means a lot to them and they don't bother about anyone else. Then we have the next term, a person who deliberately sets fire to a building is known as arsonist. सो आर्सनल हमने पढ़ा था जहाँ पे हम वेपन्स रखते हैं एंड इक्विपमेंट्स रखते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, तो उसी से अगर हम देखें तो हमारा आर्सनल समथिंग विद वेपन, समथिंग विच इज डिस्ट्रक्टिव। आर्सोनिस्ट भी उसी वे में आ रहा है जो सेट करता है किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी डेलिबरेटली सेट्स बिल्डिंग, कोई भी प्रॉपर्टी को फायर में, आग में झोंक देने वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं आर्सोनिस्ट। देन the next term is a person appointed by two parties to solve a dispute. Now कभी कभी हमारे बीच में इतने ज़्यादा differences हो जाते हैं that to find a solution is difficult, then we need some mediator. So that mediator is also known as
आर्बिट्रेटर, तो वो जो मीडिएट, मध्यस्थता करता है बीच में, जो मैटर को सॉर्ट आउट करता है, दैट पर्सन who in between settles the terms, that is known as arbitrator. Then we have the next term, one who leads an austere life. Austere का मतलब होता है strict, one who is not affected by pain or pleasure, and that is known as an ascetic. तो ascetic is one who leads a strict and an austere life and thus an ascetic, सन्यासी का है, जिससे कोई खुशी और कोई दर्द में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका व्यवहार एक सा रहता है. Then one who is not sure about God's existence. There are a lot of people who do not even think that God exists, और उन्हें हम बोलते हैं agnostic. They are not sure. जो भगवान को मानते हैं उन्हें हम बोलते हैं theist. जो नहीं मानते हैं उन्हें हम बोलते हैं atheist. और जिन्हें यही नहीं पता कि भगवान है या नहीं है उन्हें हम बोलते हैं agnostic. One who does not believe in the existence of God, this term we have just now done, that is atheist, जो नहीं मानता है. हमने एक theocracy term किया था जिसमें हम by gods, government by the gods करा था. तो theo, ये जो terms हैं ये God के लिए आए हैं, and thus atheist can be easily retained, one who doesn't believe in God. Then a person displaying aggressive patriotism, जो excessive patriotism show करते हैं उन्हें हम बोलते हैं शोविनिस्ट. नॉर्मली हम लोग पैट्रियट होते हैं, हम डिवोटेड होते हैं अपनी कंट्री की तरफ, अपने मदरलैंड की तरफ, बट जो एक्सेसिवली उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, दैट इज दे ऑलवेज टेक इट इन एन एग्रेसिव मैनर, जिससे वो चीज़ें वायलेंट हो जाएं, एंड दस इट इज नोन एज chauvinism. That person is chauvinist. A person who sneers at the beliefs of others, जो दूसरों की beliefs को एक डाउट की तरह देखता है, उस पर मॉक करता है, उसे स्कॉन करता है, उसे हम बोलते हैं cynic. तो cynic जो होते हैं वो डाउटर होते हैं, and they do not have trust in others, and they mock at the beliefs what other people have. So these are all the terms which I have for you today, and in the next class we will learn many such interesting words and also some exercise questions. So hope you go through these words, you take interest in it, learn good and come out successfully. So that is all for a day. Have a nice day ahead. Thank you all of you.